we are going to know about Earth Day, when and why we are going to celebrate it. Guys, as you know, Earth and environment, human being और environment, they are completely dependent on each other. एक दूसरे पे completely dependent है to fulfill their necessities, their needs, फॉर देयर लाइफ ऑल्सो. ओके, एक दूसरे की लाइफ के लिए एक दूसरे पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है. गाइज, अर्थ डे इज एन एनुअल प्रोग्राम. ये एक एनुअल प्रोग्राम है विच वॉज हेल्ड एवरी ईयर 22nd ऑफ अप्रैल एवरी ईयर. हर साल 22 अप्रैल में हम अर्थ डे को सेलिब्रेट करते हैं, राइट. दिस अर्थ डे वॉज इनिशियली और फर्स्ट स्टार्ट एट 1970 22nd अप्रैल बाय गैरलॉर्ड नेल्सन. गैरलॉर्ड नेल्सन ने 1970 में सबसे पहले स्टार्ट किया था आपका अर्थ डे, राइट. बिकॉज गैरलॉर्ड नेल्सन रिपोर्टेड, इन्होंने रिपोर्ट किया अ मैसिव ऑयल स्पिल इन अ स्मॉल सिटी सेंटा बारबरा. इट वॉज लोकेटेड इन कैलिफोर्निया ऑफ अमेरिका में एक छोटे से सिटी में इन्होंने एक मैसिव ऑयल स्पिल को लोकेट किया. दैट इज व्हाई दे क्वाइट कंसर्न अबाउट द एनवायरनमेंट. ओके, तो एनवायरनमेंट की तरफ इनका कंसर्न और इनके स्टूडेंट का कंसर्न बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया. और दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन समबडी वाज कंसर्न अबाउट द एनवायरमेंटल इश्यूज, राइट. उसके बाद जो नेक्स्ट आपका मूवमेंट था, दैट वाज द वर्ड अर्थ डे. दिस वर्ड Earth Day was given by a person named as Julian Koenig. Julian Koenig ने एक वर्ड दिया अर्थ डे. ओके, सो आफ्टर 1990s 1970 से 1990 तक, यानी कि कंप्लीट 20 ईयर्स के बाद, आफ्टर 1990s द अर्थ डे गोज ऑन क्वाइट ग्लोबली, राइट. पूरे ग्लोबली उसको पहचाना गया अर्थ डे को, जहाँ कंसर्न रखा गया एनवायरनमेंट के अगेंस्ट, एनवायरनमेंट के लिए कुछ ज़्यादा ही कंसर्न रखा गया बाय सम एनवायरनमेंट लवर्स, बाय एनजीओज, बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, राइट. So every year on 22nd of April, they show their concern, they produce some policies, they produce some acts to regulate or to monitor the environmental issues. ओके, जितने भी एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उन सबको रेगुलेट करने के लिए और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए, राइट. गाइज, बिकॉज देयर आर मैनी हार्मफुल इफेक्ट्स विच कॉजेज आर एनवायरमेंट टू डिटीरियोरेट. हमारे एनवायरमेंट को कंप्लीटली खराब कर रहे हैं वो हार्मफुल इफेक्ट्स. लाइक एग्जाम्पल, योर पॉलीबैग्स आर कंप्लीटली डैमेजिंग आवर एनवायरमेंट बिकॉज दे आर बायोडिग्रेडेबल इन नेचर, राइट. एंड वन ऑफ वी आर वेस्टिंग continuously water every day. Lots of water is wasting because we have a more population in world. population में भी एक बूम आ चुका है, population इंक्रीज कर चुकी है, तो वाटर का वेस्टेज जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है. Guys, apart from the wastage of water, the pollution of water is also a major concern. Pollution भी हम बहुत ज़्यादा क्वाइट कर रहे हैं अपने इस वाटर में, by the hospital effluents, by industrial effluents, right. इंडस्ट्री से, हॉस्पिटल से और काफ़ी सारी जगह से जो हमारा वेस्ट निकलता है और जाता है सीधा हमारे वाटर बॉडीज़ में, तो वो भी लगातार पोल्यूट कर रहा है हमारे वाटर बॉडीज़ को. कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, कटिंग ऑफ ट्रीज, दैट वाज आल्सो क्वाइट अ मेजर कंसर्न ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज. सो ये सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं, इन सब इफ़ेक्ट्स के एनवायरमेंटल पे जो कंसर्न है, उस पर जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत हार्मफुल हैं. वी नो अबाउट देयर इफ़ेक्ट्स. These harmful effects are like melting of polar ice caps, like increase in the global warming, okay, increasing in the global warming gases, okay, rise in the temperature, global temperature, right, okay. So guys, that is the purpose we are celebrating every year Earth Day, so that one day we are going to protect our earth. So finally, if I sum up all the things, if we want to conserve our earth and if we need to celebrate the earth day in true sense, अगर हमें सच्ची में अर्थ डे को सेलिब्रेट करना है, we need to stop the polybags, the pollution, and we need to conserve our forest. Guys, this is all about the earth day. जय हिंद, वंदे मातरम.